So here it is. This is the current situation of the market. ये मार्च से लेकर के अभी जुलाई अगस्त तक की जो निफ्टी की मूवमेंट है, that is what I have shown through the daily chart, and I have annotated the charts here. This is the bottom that you have in March, where we made something like 16,600 something, right? And then in a very smooth fashion, all higher top, higher bottoms, we have gone up, and now this is where we are, right? So what does this say? Now what I've done is I have annotated this series of boxes on it, and this is using a wdgann technique for price and time, and I have fitted that box in a certain way that lots of price and time matches are happening. So if you look here at this particular juncture, this is the price action and this is the time action, and then there is a very good match. And then projected forward, you didn't have a price match here, but you got a perfect time match here, right? And then if you go further, you got another time match here and a price match here at the top, right? It was not a price and time match, but this is a price match and here is the next time. So the next time count is coming here, right? And then the price will also come. For the price, we have this and this as two levels, and on the top side, we also have 20,000, and that will be for a new high, etc. We'll deal with that when we come to it. Important points here. Now, what we had here, using other techniques of wdgann, I had a projection for market to make a top between 24th to 20th to 24th of July, right? 20 से 24 जुलाई के बीच में मार्केट की टॉप आने की पूरी संभावना थी. ये एक wdgann के अनुसार एक कैलकुलेशन था मेरा, प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज. और इस प्राइस वाइज में मेरे पास दो सेट्स ऑफ टारगेट्स है. एक था 19,750 फ्यूचर के और दूसरा था 20,300. अब मार्केट ने बनाया 19,980. दैट इज द टॉप विच हैज बीन मेड बाय द मार्केट. ठीक है, 100 पॉइंट 20,000 के जो बेस है उस पे 100 पॉइंट्स बहुत ज्यादा मायना नहीं रखता. बट द की पॉइंट इज वी हिट दोज प्लेसेस, वी फॉर्म्ड आउट हियर सम काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न. एक हाई बनाया अपन ने और दैट डे इट क्लोज वेल, एंड देन द नेक्स्ट डे इट ओपन लोअर and it went a little down. For those who want to see this clearly, now you can see this portion, right? You made a high on the expected turn date and then you open significantly lower. ये एक typical daily chart का signal होता है of a short term reversal. So when you have the market closing right at the top or conversely right at the bottom, and the very next bar it opens with a gap, right, away from the top made or the bottom created, the market is telling you or sending out a signal to you कि भाई अभी के लिए तो ये एक टॉप गिनो या इसको एक बॉटम गिनो. ये जो प्राइस पैटर्न जो आया उस प्राइस पैटर्न में आप यहाँ देखेंगे तो एक दिन नीचे, दूसरा दिन नीचे, तीसरा दिन नीचे, 3 successive days it came down. So that was enough evidence for me कि भाई ये जो 20 से 24 जुलाई की जो विंडो है वो 20 जुलाई को ही हिट कर गई और वहां से अच्छा खासा प्राइस रिवर्सल हो गया. अच्छा, अभी उसके बाद ये जो रैली आई, दैट रैली ऑल्सो फेल शॉर्ट ऑफ दैट टॉप बार विंडो ऑफ 20 जुलाई का जो बार था उसको पार कर नहीं पाया. इट जस्ट केम नियर द लोज ऑफ इट और द क्लोज ऑफ दैट डे, एंड देन इट हैज अगेन फॉलन बैक. सो इट कंफर्म्ड कि 20 जुलाई को जो टॉप बनाया दैट वाज अ रीजनेबली गुड हाई. सो देयरफॉर we are likely to have a reaction from. अच्छा, इसमें और दूसरे क्या क्या conclusion draw कर सकते हैं, that I put down in the next slide. अब you can see one thing which I told you, that the structure which I had drawn using Gann techniques showed a good price and time match, 20 to 24 July, expected time zone. अच्छा, ये एक दूसरा Gann based conclusion है जो मैं टाइम साइकिल्स से काम करता हूँ. आई कीप राइटिंग अबाउट दीज टाइम साइकिल्स एवरी नाउ एंड देन इन माई पोस्ट विच आई राइट ऑन माई वेबसाइट www.cknarayan.com. उसमें इनसाइट्स करके कॉलम आता है, वहाँ पर मैं
एवरीडे लिखने का कोशिश तो करता हूँ, बट वीक में 3-4 पोस्ट तो आ ही जाते हैं। तो जिस किसी ने भी ये कॉलम शायद देखी नहीं हो या पढ़ी नहीं हो, it is my request that you can go there. It's a free registration. You can read it for free. I put down there what is the time cycles. I measure time cycles for every day of the month. ये मैं हर महीना निकालता हूँ कि every day, ताकि इसमें मुझे एक आइडिया आ जाता है कि tomorrow is likely to be an up day or a down day, how it will be for the week, how it will be for the month, for the quarter, etc. इससे क्या हो जाता है कि मुझे प्लानिंग में आसानी हो जाता है. आई कैन प्लान हाउ टू पोजिशन माई सेल्फ. इफ आई हैव गॉट अ राइट पोजिशन, आई नो हाउ टू force that to get more profits. If I have got a wrong position, then I know whether I should hold it or I should abandon it and take my loss, etc. तो टाइम फोरकास्टिंग जो है ना, ये एक स्पेशलिटी मैंने बनाया हुआ है कई सालों से, एंड इट हेल्प्स मी. जिसको टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट हो, वो सारे लोग प्राइस एनालिसिस ज़रूर करते हैं. मेरा सलाह ये है कि आप टाइम एनालिसिस पे भी थोड़ा ध्यान दें, उससे काफ़ी आपको फ़ायदामंद रहेगा. एनीवे, सो कमिंग बैक हियर, मेरे हिसाब से अगस्त इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ डीपली करेक्टिंग मंथ. तो मेरा उम्मीद ये है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त कि एक रेंज बाउंड महीना रहेगा. मैं एक ब्लूमबर्ग क्विंट में भी एक कॉलम लिखता हूँ, बीक्यू मार्केट्स में. Every week I write this column, and in that I also say कि how the month will be positioned, and this is also based upon the time analysis. और जो प्राइस एक्शन है मैं उसके अंदर फिट करने की कोशिश करता हूँ. BQ मार्केट्स की जो आर्टिकल्स है, that you can also try to follow. It is, I think, a small annual subscription which you have to pay to them. I have no financial interest in any of those things. I am not a promoter also, but I'm just giving you information that is another place that I write, and I write these as a weekly column in BQ. So you can go and look it up there also. So there I have put down कि अगस्त में रेंज बाउंड महीना एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं. और जब रेंज बाउंड एक्सपेक्टेशन है तो उसमें डीप करेक्शन या डीप एडवांसेस और फोर्सफुल एडवांसेस दोनों की उम्मीद नहीं, राइट. सो अब उससे एक और चीज उभरता है कि अभी अपन ने देखा कि भाई जुलाई 20 से एक करेक्शन चल रहा है. अभी एक करेक्शन कैन बी अ डीप वन और इट कैन बी अ शैलो वन. नाउ अभी मैंने ये आई जस्ट फिनिश सेइंग दैट अगस्त इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ डीपली करेक्टिंग मंथ. तो इसका मतलब है कि it will be time wise and not price damage wise. And here I have taken, if time taken for correction, that is if August stretches out, then the dips will be limited. मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस डैमेज होने की उम्मीद नहीं है in the near term, right? Today, right now we are talking about the near term. So what is this limited level? उस limited level को मैंने बताया है कि 19,300 जो अभी फ्राइडे को पहुंच चुका. फ्यूचर का लो था 19,316 और मार्केट ट्रेडर अप फ्रॉम इट. एंड on my posting in my inside column on my website, I had said dips on dips on Thursday and Friday morning should be used to buy because I expected Friday to be an up day, and so the market pulled up from the lows and finished nearly 150 points higher. So it allows you to position yourself well. So 19,300 अगर 19,300 के नीचे गिरे तो 19,000 का भी एक्सपेक्टेशन है. That will be the support zones in the short term. So this is the immediate support जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. अगर डिक्लाइंस कंटिन्यू हो जाता है, अगर मेरी जो उम्मीद है कि अगस्त विल बी रेंज बाउंड मंथ, ये अगर एक्सपेक्टेशन जो है ये गलत साबित हो गया, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, फोरकास्ट अपन कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द डेटा. इट इज फॉर द मार्केट टू से वेदर और रीडिंग ऑफ द मार्केट इज करेक्ट और नॉट. अगर डिक्लाइंस कंटिन्यू हो गए और if they were to start picking up more strength, then you will go down below 19,000 and you can go down till about 18,750 area also. So in the shorter term, this is the worst case that I am expecting. So लोगों को इसके अनुसार प्लानिंग अपना कर लेवे तो ठीक रहेगा. अच्छा, अभी एक next time window where you can check all this will be between around 6th or 12th of September in the next month. तो अगर 6th और 12 सितंबर के आसपास अगर आपको ये कोई बॉटम या कोई रिवर्सल पैटर्न या कोई सपोर्ट लेवल कहीं भी पहुंच जाए और वहां से रिवर्सल हो जाए, ग्रीन कैंडल आ जाए, वॉल्यूम्स आ जाए, न्यूज आ जाए, तो ये सब कंफर्मेटरी एविडेंस है. अगर ये सब मिल जाए
So you can think that this will be a time count for you to take a reversal. This will be the price zone for where you can expect. So there are two things to look for in the market always, कि price कहाँ तक जाएगा, and second will be in what is the time frame in which this price action will happen. Please understand that time is more important than price. लोग price को देख के action लेते हैं, but till the time on the the clock on the market does not strike, that change will not happen. So now I've given you an indicative date. आप हमारे columns जो है उसको follow करेंगे तो you will get more details on this. So this is what I wanted to say about the near term. So let's go over to the next chart and then we can see some further evidence. अच्छा, ये मैंने थोड़े से long term cycles बनाए using GAN angles, and here what I have constructed is the square of the low. ये GAN की टेक्निक है और ये लो मैंने यूज किया है मार्च 2020 के, जो एक सिग्निफिकेंट लो था 7500 की जो इंडेक्स बनी थी मार्च 24 2020, जहाँ से ये एंटायर राइज शुरू हुई. तो उसका एक स्क्वायर ऑफ द लो मैंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, एंड दिस स्क्वायर ऑफ द लो helps me find out price and time turning points into the future. तो यहाँ से मैंने कई एंगल्स मैंने इधर बनाए हुए हैं. You can see that one support which was there right onto this particular angle, right? इधर दो अलग अलग टाइप के एंगल्स है. So this was a significant support from where the market went up, and then you had this big corrective pattern which went into June of 2022, and you can see that on this angle line, that was where that bottom also occurred. Now please understand that these angle lines can be drawn and kept ready much in advance. मतलब मैं अभी 2025 के भी एंगल लाइन ड्रॉ करके रेडी रख सकता हूँ. तो ये it is not drawn after the event, it is drawn much before the event, right? So it made a bottom right there, and then you had a rally which went up there, and again this March का जो आपका decline आया, that again was precisely on this angle line, right? So the angle lines give me a very good idea of where to expect big tops and big bottoms. And now the market has been going up. Now, like I said, you can draw the angles and keep them ready. So I have drawn the next angle line and kept it ready. और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बॉक्स, एक विंडो बनाया है. वो थोड़ा सा वाइड हो गया ड्रॉ करते करते, बट यहाँ से अगर डिक्लाइन आती भी है तो दिस इज वेयर आई एक्सपेक्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका कि 18750 के करीब ये कुछ आना जरूरी है, राइट? सो हियर दिस इज वेयर you can say 18750 will be the earliest, which is what I had shown in my shorter term forecast. Now I have got longer term indicators also supporting my shorter term forecast, right? So this is something which I wanted to show. This is the square of the low using the March 2020 low, right? That's a significant turning point of the market. जब कोविड का लो बना, वहां से I think the entire market paradigm changed, so we got to see the market with new eyes.